तो अभी जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस सेशन में बात करी अबाउट फोल्डर्स, टास्क बार एंड ऑल, तो अभी हम बात करते हैं कि हाउ टू क्रिएट अ फोल्डर बाय आवर ओन सेल्फ, राइट। अभी तक तो हमने डेस्कटॉप के फोल्डर्स को देखा, उसके अंदर सब फोल्डर्स कैसे होते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई इफ इट हैज़ एनी चाइल्ड ऑब्जेक्ट और नॉट, राइट। तो अभी टू क्रिएट अ फोल्डर, सो देर इज एन ऑप्शन, यू व्हाट यू हैव टू डू, आप किसी भी ब्लैंक एरिया में, आप यू कैन एबल टू सी माई कर्सर इज मूविंग अराउंड टू द डेस्कटॉप, राइट। आप किसी भी ब्लैंक एरिया में राइट क्लिक करिए, यू कैन गो टू द न्यू एंड इनसाइड ऑफ द यू कैन एबल टू सी दिस ऑप्शन कॉल्ड फोल्डर। आप जैसे ही फोल्डर पे करेंगे तो यू कैन एबल टू सी देयर इज वन फोल्डर इज बीइंग क्रिएटेड विद द नेम ऑफ न्यू फोल्डर, राइट। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू राइट अ नेम। So let's assume I have written a name as a called test. जैसे ही आपने नाम कंफर्म किया, so either you can press enter from your keyboard or you can click outside. आप जैसे ही बाहर क्लिक करेंगे तो your now folder has been created. So you can see the folder is being created with the name of called test. अब जैसे इस पे आप डबल क्लिक करते हैं तो you can able to see there is a one folder but it doesn't have any of the sub file or folder because we just have created a one folder now. अगर आपको टेस्ट फोल्डर के अंदर भी कोई फाइल बनानी है तो व्हाट यू हैव टू डू, पहली चीज़ तो जिस फोल्डर के अंदर आपको एक नया फाइल या फोल्डर बनाना है तो यू हैव टू ओपन दैट फोल्डर फर्स्ट। आप जब इस फोल्डर को ओपन कर लेंगे तो आप अब इसका एरिया देख रहे हैं स्क्रीन में, यू हैव टू फॉलो द सेम स्टेप्स, यू जस्ट हैव टू डू अ राइट क्लिक, यू हैव टू गो टू द न्यू and you can create a new folder. Let's assume the folder I have created now called user1, and suppose in test I need two folders, one is a user1 and the second I need to create as a user2. तो अब जैसे ही अब इसके फोल्डर खोलेंगे तो now you can see the root level folder name is called test, and after this test we have a user1 and inside of the user1 we do not have any folder or file. अगर आप बनाना चाहते हैं तो यू हैव टू फॉलो द सेम प्रैक्टिस, डू अ राइट क्लिक, गो टू द न्यू एंड क्रिएट अ फोल्डर। बट लेट्स अज्यूम कि अब मुझे ना टेस्ट के अंदर फोल्डर नहीं बनाना, आई नीड टू स्टोर अ फाइल इनसाइड ऑफ माय फोल्डर, राइट। आई डू नॉट नीड अ प्लेस होल्डर, आई नीड टू स्टोर अ फाइल, राइट। तो फाइल को स्टोर करने के लिए देयर इज अ टू ऑप्शंस, ईदर यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप अ फाइल टू द पर्टिकुलर फोल्डर लोकेशन। For an example, there is a one working folder which is having one file called test user, right. You can able to see the type of the file is text document. What you can do, आप इस फाइल को either you can cut, let's assume कि आप चाहते हैं कि मुझे ये फाइल जो है वो इस वर्किंग फोल्डर में नहीं चाहिए, आई नीड टू हैव दिस फाइल इनटू द टेस्ट फोल्डर, तो यहाँ से मूव करके दूसरे फोल्डर में लाना। तो व्हाट विल डू कट दिस फाइल, आई एम गोइंग टू मिनिमाइज दिस, जो हमने बात करा था, आई एम गोइंग टू ओपन द फोल्डर जहाँ पे मुझे वो फाइल चाहिए। व्हाट आई डू अ राइट क्लिक एंड डू अ पेस्ट, कट एंड पेस्ट, कट जहाँ से हमें वो फाइल हटानी है, पेस्ट जहाँ पे हमें वो फाइल मूव करनी है। तो अगर आप मैं आपको वो ओरिजिनल फाइल फोल्डर दिखाऊँ जहाँ पे वो पहले फाइल थी वर्किंग, तो आप देखेंगे वर्किंग के अंदर से वो फाइल मूव हो चुकी है, बिकॉज वी हैव मूव दिस फाइल फ्रॉम वर्किंग टू द टेस्ट फोल्डर। इज इट क्लियर? ये तो था दिस ऑप्शन पर। द ऑप्शन 2 इज बेसिकली, लेट्स अज्यूम कि आपने एक नोटपैड खोला फॉर एन एग्जांपल, आपने एक फाइल बनाई है, सपोज लेट्स कीप hello only, right. So let's assume I'm going to save file, I'm going to put save. Now where we wanted to save the file, I just go to the desktop, हमने कौन सा फोल्डर बनाया था, we have created a folder named test, right. So I open the test folder, आप देख रहे हैं टेस्ट के अंदर हमारे दो फोल्डर्स हैं, we have one file। अगर हम एक और फाइल अपने नाम से बनाना चाहते हैं, what I'll do, I'll save this file with the name of Amit। जैसे ही मैं सेव करता हूँ, you can see in the top of the heading prior to the notepad there's a name Amit। what is Amit? Amit is the file name जो अभी अभी हमने सेव करी। तो पहली चीज़ तो ये पहचान है, कोई भी लेट्स अज्यूम किसी के स्क्रीन में कोई फाइल खोली है, हाउ यू आइडेंटिफाई इज दिस फाइल सेव और नॉट, तो यू कैन क्विकली लुक इनटू द टॉप नेम। अगर उस टॉप का नेम कोई ऑथेंटिक नेम है तो विच इज बेसिकली गिव यू सम highlight, yes, this file is already been saved. Now let's close this।
अब मैं अगर टेस्ट फोल्डर के अंदर जाता हूँ तो यू कैन एबल टू सी वी हैव यूजर 1 यूजर 2 एंड वी हैव अमित एज वेल, जो फाइल अभी अभी रिसेंटली हमने क्रिएट करी। इज इट क्लियर? अगर मैं इस फाइल को ओपन करता तो यू आर गोइंग टू सी द सेम टेक्स्ट विच वी हैव रिटन अर्लियर। क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड फोल्डर। अब एक क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि हम लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, वी आर सीइंग लाइक फोल्डर्स आर कमिंग इन ए वेरी वेल फॉर्म, मतलब इन अ वेरी एक अलाइनमेंट में है सबके सब। वाई दिस टेस्ट इज कमिंग समवेयर ना विच इज नॉट इन टू द सेम सीक्वेंस? So there are two options to make it into the alignment form. Either there is a manual approach जिसमें what you have to do, आपको left click से वो सब folder select करना है and you have to drag to the place और location जहाँ पे आप चाहते हैं, and you have to leave your cursor. अब जैसे ही वो आप लेफ्ट क्लिक और रिलीज करेंगे तो योर फोल्डर इज गोइंग टू बी लोकेटेड टू द सेम वन। बट क्वेश्चन ये आता है फॉर अ सिंगल फाइल और फोल्डर इट इज इजी, राइट? इट्स गुड टू ड्रैग एंड ड्रॉप, बट लेट्स अज्यूम कि हमारे बहुत सारी फाइल्स एंड फोल्डर्स क्रिएटेड हैं बट नन ऑफ दस आर इन टू द राइट प्लेस। नाउ हाउ टू मेक देम इन अलाइन, राइट? अब इसके लिए वन बाय वन करना इज गोइंग टू बी बिट डिफिकल्ट टास्क, राइट? तो उसका easiest फॉर्म क्या होता है? द सेकेंड अप्रोच इज व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू गो टू द राइट क्लिक, सॉर्ट बाय, एंड यू कैन जस्ट सेलेक्ट एनी ऑफ द ऑप्शन। सो जिस भी आप तरीके से चाहते हैं, डेट मॉडिफाइड बेसिकली से कि कौन सा रिसेंटली मॉडिफाइड हुआ है, दैट विल कम अप, आइटम टाइप, सो सब हिसाब से यू कैन मेक इट इनटू द अरेंजमेंट फॉर्म। Is it clear? Any doubt on this particular topic, related creation of the folders, how to create subfolders and files? Good. Now let's talk about some start menu, right? So start menu, आप देख रहे हो कि डेस्कटॉप पे तो हमारे पास लिमिटेड ही फोल्डर्स एंड फाइल्स है। क्या पूरे कंप्यूटर का काम सिर्फ इन्हीं फोल्डर्स पे डिपेंडेंट है? Is it true? No. A computer is a right which can help us to do lots of technical things and help us to reduce our manual efforts. तो अगर आपको कोई भी ऐसे सॉफ्टवेयर पे काम करना है जो आपके डेस्कटॉप पे नहीं अवेलेबल है बट यू हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड दैट सॉफ्टवेयर इनटू योर मशीन, you can directly open using on the start menu. What you have to do, you have to go to the start. Either you can search that software directly from the search bar. Let's assume I am going to say I need a Microsoft Word. So you can see as soon as I just selected it, I can able to see automatically it will see the WA is coming into the WordPad name. The WA is also coming on the Microsoft Word. So जो भी से relevant होंगे system will show you in the list. आप यहाँ से directly what you can do, you can just click on it and what you will see that software is directly open for you and now you can start. Okay, good. Am I clear? Related to the start menu is nothing, it's basically a location from where you can open any software which is already installed to your computer, and those are some taskbar shortcut menus. So we'll go through this one by one. तो आज का जो बेसिक था इट वॉज कोर रिलेटेड टू सम फंडामेंटल्स अबाउट फोल्डर्स, फाइल्स, शॉर्टकट मेन्यू बार, राइट, डेस्कटॉप। और एक क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि जो डेस्कटॉप का वॉलपेपर है, हाउ टू चेंज द वॉलपेपर? इज इट पॉसिबल टू चेंज द बैकग्राउंड ऑफ द डेस्कटॉप? यस, वी हैव एन ऑप्शन. सो दैट ऑप्शन इज कॉल्ड बेसिकली पर्सनल. सो आप जैसे ही अपने कंप्यूटर पे राइट क्लिक करते हैं, व्हाट यू विल सी देयर इज एन ऑप्शन कॉल्ड पर्सनलाइज. आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे यू कैन एबल टू सी देयर आर सो मेनी ऑप्शंस. देयर इज अ डेस्कटॉप बैकग्राउंड, राइट, the window color. So window color is nothing, those you can able to see in the bottom right, the task bars and all, those are also having